गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। पैसा बोलता है मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज भारत के एक बड़े कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो का फुल नाम है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स। ये कंपनी एक जमाने में वनस्पति बनाती थी और बेकिंग सोडा बनाती थी। इस कंपनी को असीम प्रेम जी ने टेक ओवर की जब उनकी पिताजी का अचानक इंतकाल हो गया। उन्होंने इस कंपनी को टर्न अराउंड की और एक बेकिंग सोडा और वनस्पति मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा आईटी सुपर पावर बना दिया। आज भी उनका एक एफएमसीजी कंपनी है जिसको उन्होंने इससे स्प्लिट करके एक प्राइवेट कंपनी बना दी है। वो एफएमसीजी कंपनी सोप, लाइटिंग और अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डोमिनेट करती है। ये कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर करती है। एक जमाने में विप्रो इप्सन के साथ जॉइंट वेंचर में प्रिंटर भी बनाती थी और हार्डवेयर को भी डोमिनेट करती थी, लेकिन उसको उन्होंने ये सब छोड़कर आज सिर्फ एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जन्म लिया है। ये कंपनी का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहा। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट वैसा ही रहा जो पिछले साल में था 3075 करोड़ रुपया। टर्नओवर 23,190 करोड़ की टर्नओवर है। तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10 या 15% लगभग है ये टर्नओवर की हिसाब से। शेयर की प्राइस एक महीने में लगभग 7% ऊपर है, माने कि वो 352 से लेके आज ये 405 रुपया तक है, लेकिन एक महीने के पहले 375 तक पहुंच गई है। ये 52 वीक हाई लो इस कंपनी का 476 एंड 52 वीक लो है 352 में है। तो इट्स 52 वीक हाई लो इज 476 एंड 352। ये पी/ई रेशियो है 19.6 और आज उनका प्राइस 405 रुपया में है और डेट टू इक्विटी 0.22 में है और प्राइस टू बुक 2.86 है। ईपीएस 26 रुपया 60 पैसा का है और अर्निंग्स यील्ड लगभग 7% है। इस कंपनी जनरली अंडरवैल्यूड है क्योंकि ये हम सबको पता है कि प्रेम जी की कंट्रोल आयरन फिस्ट की होती है और वो अपना सीईओ को इतना फ्रीडम नहीं देते हैं। ये तो मार्केट परसेप्शन है कि वो फ्रीडम नहीं देते हैं और उनके बेटे ऋषभ प्रेम जी स्लोली कंपनी के रैंक्स के थ्रू ऊपर आ रहे हैं और एक दिन सीईओ बन जाएंगे जैसे उनके पिताजी। ये प्रमोटर फैमिली के पास 72% लगभग 73% स्टेक है और उसमें से असीम प्रेम जी, यासीन, रशद और तारिक के पास ये सब स्टॉक पड़े हैं, लेकिन इसमें से 50% तो उन्होंने कमिट कर चुके हैं कि वो असीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी को देंगे। ये प्रेम जी का ख्याल है कि उनका प्राइस मार्केट ये ट्रू वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है इस कंपनी की ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू है 445 रुपीस। तो वो क्या चाहते हैं कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस उनके पास हैं उनसे से 12 करोड़ लेके उसको शेयर्स को वापस खरीदना चाहते हैं 445 रुपीस में। अगर वो बाईबैक फुल माने में हो जाती है 12,000 करोड़ लग जाती है तो लगभग 4.91% ऑफ टोटल इक्विटी वापस खरीदा जाएगा। वो जून 16 को ये इश्यू ओपन हो रही है। What will happen is, since Asim Premji feels that the market price of his stock is not reflecting the true value of the company, he is proposing to buy back shares to the tune of 12,000 crores at the rate of 445 rupees. It is his belief that the correct value is reflected around 450 rupees. So the buyback will reduce the total number of shares in this company by 4.91%. We do not know at this time whether Premji is going to tender his shares or not. If Premji does not tender his shares, what will happen is the amount of the stock holding of Premji will go up by 5% and breach that 75%. So what Premji will do is to keep the holding at 73%, will tender some shares for buyback. What this buyback will do is two things. It will reduce the number of shares, and because the number of shares has reduced, the denominator will reduce when you calculate earnings per share. Suppose the profit is 200 rupees, a number of shares is 100, your EPS is 20. But now what will happen is 200 divided by it will become 95 rupees
95 shares. So 200 by 95 will give a greater value. Even if the profits don't change, since you are dividing by a lower number of shares, you are going to get a higher EPS. Also, the second thing, this will allow him to retain control of his company and he will be able to take cash out. The company will have to pay a tax on this. Buybacks were not taxable till a couple of years ago. Now buybacks are taxable, so the company will pay a 20% tax on, because this is considered as distribution of money back to the shareholders. So basically what you are expecting is the number of shares will come down and therefore the price of this company will go. When you go by the Benjamin Graham method, Wipro remains a great company to buy. If you are looking at a very long-term holding beyond 5 to 10 years, then you can buy Wipro at this price. Otherwise, it is better. If you are looking for a quick turn, it is not profitable. But the way he runs his company over a long period of time, definitely there is going to be a lot of value addition. This buyback is happening after 2 years. 2 years back, there was a buyback in December 2020, January 2021 for 9,500 crores. In August of 2019, he put in another 10,500 crores. That is, if you add these three buybacks, which is his favorite method for taking money out of the company and also to reward shareholders by reducing the number of equity, he has basically is going to put in 32,000 crores to buy back his shares. The number of shares have shrunk. He is holding on to his shares. So basically, the earnings from the company will definitely increase over a period of time. The result may not reflect immediately, but will over a period of time. This is a way by which Buffett also rewards his shareholders. He asks you two crucial questions. Does the company have enough money to do all the business it requires to do for the next several years? Second, is the market reflecting a price which is far lower than what actually the promoter thinks is the value of price? And if both these conditions hold, it's no-brainer that the share has to be bought back. In the case of Premji, he has all the cash he requires to grow his business. He does not require more cash, and this cash is lying with him. Also, he believes, which I also concur, that the value of the stock is far lower than the actual fair value or the intrinsic value, and therefore he is being repeatedly buying back. It is up to us to see whether you want to invest and wait for a long period of time. Thank you for watching Paisa Bolta Hai. I hope you understood the concept of buying back shares. आप इस पॉडकास्ट को सुने, बाईबैक के बारे में आपको ज्ञान मिला होगा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. धन्यवाद. नमस्कार. Jai Hind. If you like this video, hit the like button of this video. It does help us with the algorithm. Subscribe to our channel. Turn on the bell notification. Once again, I thank you for your support for Paisa Bolta Hai. Paisa Bolta Hai में फिर से आपका स्वागत है. जैसे मैंने अपने दूसरे चैनल में बताया आप लोगों को, मैं 11 जून रविवार कोलालमपुर मलेशिया में रहूंगा. उधर शेरेटन इंपीरियल होटल में मैंने एक मुलाकात अरेंज की है. उधर शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक मीटिंग रखा है. जो भी उधर आप मुझे मिलना चाहते हैं, उधर आप आ सकते हैं. ये लिंक नीचे दबाने से एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिलेगा, जहां आप हमारा टीम से संपर्क कर सकते हैं और डिटेल्स आपको देंगे. ये पिल सिटी मॉल के पास है, जलान सुल्तान इस्माइल एरिया में है. कोलालमपुर मोनो रेलवे स्टेशन इसके पास है. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद.